कि फर्स्ट ABC वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है 3 पॉइंट्स दिया चाहिए तो इसका 90 डिग्री है। नाइस। अच्छा ये 90 डिग्री है। सो ओके विच इज इंस्क्राइब्ड इन सब का लेंथ, ओके इन सब की लेंथ भी 5 है। ओके इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एस। Oh, okay. So we are talking about कि उसका circumference is origin basically, right? Yeah. So 3 + 4i is something like ये एंगल हो जाएगा और फिर -4 प्लस, हाँ वो तुमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया बेसिकली, ऐसा बोलो ना, विच इज दिस एंगल और समथिंग। तो ये ऐसा है लाइक दिस। नहीं 3 प्लस, हाँ एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा रहेगा π/4 से। फिर तुमने ऐसा कर लिया इसका और फिर तुमने क्या किया है 4 + 3 आयोटा। सो वेट इजंट दैट जस्ट, हाँ 3 + 4 आयोटा का उल्टा कर दिया बस। सो 4 + 3 आयोटा इज लाइक, हाँ ये इस टाइप का कुछ तो भी। एंड ओ वेट इसका भी इनफैक्ट उल्टा, सो ओके ओके -4 का हमने +4 कर दिया, सो ये दोनों सेम लेवल पर है। अच्छा these are the vertices of triangle ABC which is inscribed in circle s equal to 0. Okay, very weird. ट्रायंगल ABC, ठीक है जो भी है। उसके सो ये ABC है, ये A है, ये B है और ये C है। फाइन, इसके आगे क्या, that AD, BE and CF are altitudes through ABC which meet the circle at Z1 Z2 Z3. सो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है अपन Z1 तो डायरेक्टली देख सकते हैं, Z1 इज जस्ट दिस थिंग। सो क्योंकि ये चीज क्या 3 + 4 आयोटा थी, दिस शुड बी 3 - 4 आयोटा। So similarly तुम्हारे से Z2 Z3 आएंगे, राइट? सो Z2 is so perpendicular to this, it's supposed to be B से perpendicular AC पर, right? So AC is like this, it's gonna go like that somewhere over here, I don't know something like that, right? Yeah. So यहाँ पे कहीं तो भी रहेगा, we don't know. So all we really care about is कि वो कहीं ना कहीं है। Fine. उसका अपने को करना क्या है? So ऑप्शंस देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 तो अपन ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं यार, तो फिर A का तो आंसर इजी है, इट्स जस्ट 3 - 4 आयोटा, राइट? या सो वही था ना ये, इट वाज 3 + 4, हाँ 3 - 4 आयोटा। फिर B का क्या है? ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ओह या ऑयलर्स लाइन, वी नो दैट। सो अपन सेंट्रॉइड आराम से ढूंढ सकते हैं, राइट? सेंट्रॉइड इज जस्ट, तो ये और ये सर्कम सेंटर है, सेंट्रॉइड इज व्हाट, सो 3 + 4, sorry 3 plus -4 + 4 0, so 0.3 just 1, and then फिर plus 4 + 3 + 3 which is 10, so 10/3 iota, that's our ortho, that's our centroid. And we know classic है, तो एकदम G O and H ये 2 times रहता है, तो फिर O to H is like 3 times the vector of this, so basically इसका 3 times, so 3 + 10 iota, that's the ortho center. So अपने को B Q हो जाएगा बेसिकली। C का करते हैं, वैल्यू ऑफ Z1, वेट व्हाट, अपने को Z2 Z3 तो पता है नहीं, तो फिर अपन ये कैसे करेंगे? ऐसा लग रहा है कि कहीं से तो भी उठा के चिपका दिया। वेट, इनके मल्टीप्लीकेशन क्यों, आई डोंट नो, कि मेरे पास टाइम भी नहीं है। सो नॉर्मली इसको करते हैं, मतलब जस्ट फिगर आउट द थिंग्स। देखो Z1 पता है, अगर मुझे डायरेक्टली Z2 और या जो भी अपन Z2 Z3 ढूंढ लेगा और फिर इसमें पुट कर देंगे, राइट? दैट्स वन वे। अच्छा अपने को Z2 करना है, कैसे करूँगा मैं? सो बी से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा AC पर, राइट? Yeah, well AC, what is AC vector? That's basically क्या था AC, A to C यानी कि 1 - iota, right? ये 1 है, iota नहीं है। So 1 - iota is the AC vector. अपने को वैसे भी इसको यूनिट वेक्टर देखना है, right? So like this basically means e power I pi upon negative I pi upon 4 is what you look for, right? Okay. और फिर अपने को क्या करना है, अपने को सो बी से अपने को करना है ना, राइट? हे इजंट दैट लाइक, अच्छा अपने को बी से अल्टीट्यूड ड्रॉप, ऑर्थो सेंटर को रिफ्लेक्ट करो अबाउट एसी एंड देन यू आर डन। सो बेसिकली अपने को एसी के अबाउट ऑर्थो सेंटर को रिफ्लेक्ट करना है। अपन ऑलरेडी ऑर्थो सेंटर ढूंढ चुके हैं, राइट? सो दैट विल जस्ट बी 3 + 10 आयोटा।
C अपने को पता है इज जस्ट दिस थिंग, सो व्हाट इज एच सी, या फिर हाँ एच सी, दैट विल जस्ट बी -1 प्लस 7 आयोटा, राइट। सो अपने को पता है कि एच टू सी, सो अगर अपन नॉर्मल डायग्राम लाइक अपने करना क्या, अपने को ए सी के अलॉन्ग जो ऑफ सेंटर जहाँ पे भी होगा अपने को उसको रिफ्लेक्ट करना है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो अपने को पता है, अपने को सर्कल में मिलने वाला है, दैट बेसिकली वर Z2, राइट, Z2। सो अपने को ढूंढने के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज कि अब मैं ये वेक्टर ढूंढ रहा हूँ, मैं ये वेक्टर ढूंढ रहा हूँ, और उसके बाद में क्या करूंगा कि आई मीन अपने को लेंथ वैसे भी लगने वाली है, राइट। व्हाट आई विल डू इज कि विल जस्ट डू एच सी वेक्टर अपॉन, सो अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर डालूं देन फाइन, एच सी यूनिट वेक्टर अपॉन ए सी यूनिट वेक्टर, ये जो अपना रहेगा रेशो, दैट्स बेसिकली दिस एंगल का ई पावर आई, वो जो भी रहता है, राइट। सो अपने बस उसको उल्टा करना है, सो दैट वी गेट दिस थिंग, यस। सो दैट्स लाइक ए सी यूनिट वेक्टर अपॉन एच सी यूनिट वेक्टर, ओके। और फिर वो टाइम्स या अपना अपने को वो मिल गया, फिर अपने को बस इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन यू विल गेट दैट थिंग। सो दिस टाइम्स AC vector once again, I think, right? Of course. So AC vector का unit vector का square, right? That's what we are looking for. फिर अपने को वो मिल गया, उसके बाद में क्या करना है अपने को, उसके बाद में अपने को इसको वापस स्केल अप करना पड़ेगा, तो अपने को इसको HC के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है। बट ये जो अपन कर रहे हैं isn't that like just taking the conjugate of HC, so basically conjugate HC, right? Or that times AC vector, so unit vector का square, नॉट लाइक नॉट एज वेक्टर, जो अपन डॉट प्रोडक्ट थे वैसा नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर की ट्रीट कर रहे हैं अपन उसको हर जगह। सो एच सी का कॉन्जुगेट कर जाएगा -1 -7 आयोटा, और फिर इसका अपने को स्क्वायर करना ई पावर आई -i पाई अपॉन 4, उसका स्क्वायर ई पावर -i पाई अपॉन 2, लाइक 1 अपॉन आयोटा बेसिकली, दैट्स गोइंग टू बी आयोटा -7, सो -7 प्लस आयोटा, दैट इज अवर, हे दिस वाज इजी। सो Z2 इज जस्ट क्या था ये, -7 प्लस आयोटा। सेम चीज अब अपने को क्या करनी है सी के लिए, लेट्स डू इट फॉर सी। राइट, सो अपने को रिफ्लेक्ट करना है अबाउट, सो अपने को एच को रिफ्लेक्ट करना है अबाउट व्हाट नाउ, मैंने सही तो क्या सब कुछ, या मैंने बी का यूज नहीं किया, राइट। आई मीन इट्स गुड, नो प्रॉब्लम। अब अपने को सिर्फ वी हैव टू डू इट फॉर ए बी, राइट। अपने को रिफ्लेक्ट करना है एच को अबाउट ए बी, एंड दैट विल हैव द थिंग, सो राइट A B H dash, more or less just Z3, okay। so पहले तो HP vector ढूंढ लेते हैं, so HP vector, HB is of course like shit, HB is going from H to B, अपने को B बचना है, BH vector, but whatever, फर्क क्या पड़ता है, shit ये चीज नहीं, oh god no, that's not Z3, oh no, uh-oh, अपन ने ये वेक्टर ढूंढ लिया था बीच में, ओके ओके, अपन ने Z2 गलत कैलकुलेट किया, पूरा वापस जाओ, राइट। अपन ने क्या किया, अपन ने AC वेक्टर ढूंढा पहले तो, राइट, विच इज ओके, गोइंग फ्रॉम A to C, राइट। अपन ने A to C करना था अपने को, दैट वुड बी 1 माइनस आयोटा, ओके अंडरस्टैंडेबल। फिर अपन ने HC वेक्टर ढूंढा, विच इज गोइंग फ्रॉम H to C, वी डोंट वांट इट, वी वांट CH वेक्टर, बिकॉज अपने को उल्टा जाना है, यस। So CH vector is, so H vector minus C vector. So H is just 3 plus tan iota minus of C vector. हाँ वो ओके, तो मैंने बस नाम उल्टा किया इसलिए, ठीक है। फिर अपन ने उसको रिफ्लेक्ट किया अबाउट दिस, तो अपने को ये वेक्टर मिल गया, राइट। सो द वे वी डिड इज लाइक 2 टाइम्स ऑफ ये जो यूनिट वेक्टर रहेगा इसका, राइट, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, सॉरी, सो स्क्वायर ऑफ दिस यूनिट वेक्टर, और फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो इस वेक्टर के, कूल। सो वो सब करने के बाद में what we got is -7 plus iota, but अभी भी खत्म नहीं हुआ है। The thing is we have to attach this vector to C to get the thing done. So C क्या था, 4 plus 3 iota plus this thing, that's gonna be what, -3 plus 4 iota, right? That's the thing. So actual में Z2 is just -3 plus 4 iota. So yeah, I mean you can see length जो रहेगी just gonna be, so
स्क्वायर रूट ऑफ या ओके पहले स्क्वायर रूट ऑफ अपने को 50 मिल रहा था, अब यहाँ पे अपने को स्क्वायर रूट ऑफ 5 मिल रहा है, सॉरी 25 मिल रहा है, व्हिच इज व्हाट वांट, सो दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। ओके अपने को सिर्फ इस साइड से z3 भी ढूंढना है, लेट्स डू इट। सो सेकंड डायग्राम बनाओ इसकी। वी वांट टू रिफ्लेक्ट h अबाउट व्हाट पॉइंट, अबाउट AB, right? Okay, so AB, this thing is H. H is just 3 comma 10. B is negative 4 comma 3, and A is 3 comma 4. Okay, और अपने को बस H dash ढूंढना है, then you will go to go. उसमें अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर पाएंगे and you will get the thing. Cool, right? So पहले तो अपने को ये चीज, पहले तो अपने को ये वेक्टर ढूंढना है. This vector will just be so H minus B, which is 7 comma 7, right? उसका अपने को कॉन्जुगेट लेना है, which will be 7 comma negative 7, राइट। उसको अपने को मल्टीप्लाई करना है, सो बाय द स्क्वायर ऑफ दिस वेक्टर। ये वेक्टर है कितना एक्चुअली में, उसका यूनिट वेक्टर एक्चुअली में, सो दिस विल बी 7 comma 1, राइट। सो उसके यूनिट वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करना है, उसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, इट विल बी 7 comma 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, उफ तो बहुत लंबा है, स्क्वायर रूट ऑफ 50, राइट। ओके उसका स्क्वायर करना है अपने को, राइट, मतलब 7 comma, so 7 प्लस आयोटा, इसका स्क्वायर, दैट्स ओके शिट 49 प्लस माइनस बनाया जाएगा ना फिर 48, एंड देन ये चीज क्या हो जाएगी, प्लस 2 7s लाइक ओके 14 आयोटा अपॉन 50, which is so 24 plus 7 iota upon 25. You're gonna multiply by that, and then you will have the thing. मुझे लग रहा है कुछ अच्छा मिलने वाला है ये सब करने के बाद में। Still think about it. सही तो किया ना मैंने। A is 3,4, B is negative 4,3. A minus B is just 7,1, right? Yeah. कभी कभी होता है गंदे वैल्यूज मिल जाते हैं। In any case, ये चीज अपने को करना पड़ेगी। 7 times all of this. 7 times 24 is 14, and ये तो बड़ा लंबा है यार, बहुत लंबा है ये। जिसको ऐसे करना 7 times 1 minus iota times all of this. So minus iota I got 24 plus 7 iota upon 25 or whatever. Right. Okay, well whatever. It's gonna be about 7, and then so 24 plus 7 iota मिलने वाला है, यहाँ पे क्या मिलेगा, तो बस 24 plus 7 मिल जाएगा, right? Which is going to be 30. ये तो बहुत लंबा है, कोई और अच्छी मेथड नहीं है करने की। माइनस 7 आयोटा प्लस 24 आयोटा है सपोज्ड टू बी 14, क्या कर रहा हूँ, 17 आयोटा। ओके अब मुझे पूरा यकीन है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। माइनस 24 प्लस 7 इज टू माइनस 17 आयोटा अपॉन 25, और मोस्ट लाइकली गलत होगा अपना, बिकॉज इतना बड़ा कैलकुलेशन के बाद में गलत ही होना चाहिए, राइट। और जो अपने आंसर से उसमें ये सारी चीजें, राइट। Z2 जो था वो Z plus 3 iota था, Z1 was 3 minus 4 iota, Z3 will be जो भी तो Z3, oh wait, this times that, isn't that just 5 का square, 25 of course, हाँ okay maybe there's hope for us, but ये चीज अपने को इस तरह से नहीं मिल रही है। अगर ये Z1 Z2 upon 25 होता है, it would be good, because then okay नहीं वो तो सही नहीं होता ना, बिकॉज यार आई डोंट नॉट बी गुड थिंक यार। doesn't look like it's going to be anything good. ये I mean सिर्फ हम गैस करना पड़ा तो अपने को R बोल सकते हैं, राइट, बट हाउ डू वी नो इट्स गोइंग टू बी R? ये 3 plus 4 आयोटा ही क्यों पर्टिकुलरली, राइट, वो तो अपन ए पे वापस आ गए। 3 plus 4 आयोटा का सिग्निफिकेंस क्या है इसमें?
नो सिग्निफिकेंस सीरियसली। तो ना इसकी कोई अच्छी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है ना कुछ और हो रहा है। व्हाई इवन डू दिस? ओके आई थिंक वी शुड स्किप दिस बिकॉज ये कुछ भी अजीब ही हो रहा है और अपने को जो मिल रहा है वो इससे मैच तो बिल्कुल नहीं कर रहा। सो जस्ट स्किप। अगर किसी कोई टाइप की प्रॉपर्टी होगी आई विल लुक फॉर दैट लेटर ऑन। अभी तो अपने को इसे स्किप करना चाहिए। 52। ओके, 10C0+4 10C1+7 10C2 चलते जाओ 10C10 तक। ठीक है, क्या ये इसमें चार, इसमें तीन तीन का डिफरेंस है राइट। सो इट्स लाइक 1+x³ बट स्टार की टर्म है सो जस्ट एक्स इसमें डाल दो। ओके टू द पावर ऑफ 10 ऑफ कोर्स। सो स्टार्ट में तुम्हें 1 मिलेगा, फिर तुम्हें 10C1 में क्या x³ और टाइम्स x इज लाइक 4 ऑफ कोर्स। इट्स गोना वर्क ऑफ कोर्स। सो या उसी से डेरिवेटिव लेना है अपने को, उसके अंदर x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, गुड टू गो राइट। यस। सो इसको डिफरेंशिएट किया, इसमें 1 पुट किया, दिस इज गोइंग टू बी जस्ट 2 पावर 10 के प्लस, ये तो वैसे भी 1 होने वाला है, उसको फर्क नहीं पड़ता। सो जस्ट 10 एंड देन 1+x, ठीक है ना, 2 के पावर 9 हो जाएगी फिर ये। और ये 3 आएगा बाहर बट वो बाद में 1 ही है, सो डोंट वरी। So this will just be like 2 power 9 कॉमन ले लो, 2 प्लस इसमें 2 power 10 वैसे भी बन ही रहा है ना, सो वही कॉमन ले लो डायरेक्ट 2 power 10 and then 1 plus what 15 I think that's going to be 16 times 2 power 14 I think that is supposed to be that's not here what q नहीं है यहाँ पे। got to put x equal to 1, उसके अलावा कोई और तरीका थोड़ी है। डिफरेंशिएट किया, पहला वाला 2 पावर 10 मिला अपने को, प्लस दूसरा तो वैसे फर्क नहीं पड़ने वाला है 10 एंड देन इसका डिफरेंशिएशन 2 पावर 9 आ गया टाइम्स 3 2 पावर 10 इट्स सपोज्ड टू बी लाइक दिस। या इट्स गॉट टू बी 2 पावर 14, वो इसमें क्यों नहीं है आखिर? आई डोंट नो यार, इट्स नॉट इन द ऑप्शंस बट इट शुड बी। ए का है 2 पावर 14, वो माने ना माने इट्स जस्ट दिस थिंग राइट। ओके 31 तक जा रहा है, इट मैचेस विद द थिंग राइट। सो +3 +3 +3 सो 1 + 30 हो गया, फिर 10 बार तुम्हें ऐड करना पड़ा। या इट शुड वर्क, इट शुड रियली वर्क ऑफ कोर्स। और अपने तो ये तो सही किया ना अपन ने, और कुछ थोड़ी ना। या ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज टू बी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बी करते हैं। 20C0 + 20C2 प्लस सारे सारे सिर्फ इवन कोएफिशिएंट्स राइट। या क्या कर सकते हो तुम, 1 + x की पावर 20 करो, तुम्हें सारे क्वेश्चन 1 + 1 लाइक 2 पावर 20 करो, तुम्हें सारे मिल जाए क्वेश्चन। -1 पुट करो, सो 0 पावर 20 तुम्हें सिर्फ इसका मतलब क्या हुआ कि सो इवन क्वेश्चन और क्वेश्चन का सम सेम है, सो इसका आधा कर दो बेसिकली 2 पावर 19 विच इज गोइंग टू बी p। ओके सी करते हैं। 8C0 + 3 square, यहाँ पे 3 square, wait what, then 5 square and then 17 square, this is different। 8C0 फिर 3 square फिर 5 square, why is that the same? squares में क्यों जा रहा है अब ये? is that normal? can't be, it can't be, ये अजीब है। 3 square 5 square 17 square चलते जा रहा है, सिर्फ 3 5 नहीं था, it would be doable। Oh, okay, it's not that bad. Actually, the thing is तुमने double differentiate किया है, right? So, just have 1 + x की power. So, कितने का difference है? Okay, 1 फिर 3, right? So, 2 का, so just 1 + x² की power 20. Sorry, नहीं 8. That's going to be like 8C0 plus, अपने को पहले तो 1 लगेगा, so x times of that. So, 8C0x plus 8C1x³ चलते जाओ, फिर इसको differentiate करो once, right? So, राइट जो भी इसका होता होगा, व्हाट विल यू गेट, इट्स गेट लाइक, हाँ ठीक है ना, स्टेट डाल देना। ठीक है करते हैं, इसे तो करना पड़ेगा नहीं, इट्स लाइक 1 + x² की पावर 8 राइट। फिर 1, सो यहाँ पे आ गया था, सो 2x आने वाला है, लाइक 2x² एंड देन 1 + x² की पावर 7, 8 भी बाहर आएगा, सो जस्ट 16 राइट। ओके फाइन,
Isn't this like 16x square plus 1 plus x square? Okay, we तो वापस आ गया like 17x square plus 1, right? And that times of 1 plus x square की power 7. ये जो पूरी चीज है that just equal to इसका differentiation just 8c0 plus 8 plus 3 8c1 x square चलते जाओगे. अब क्या बस इसको वापस 3 से वापस x से मल्टीप्लाई करो और वापस डिफरेंशिएट करो, राइट? So x times of this thing and then differentiate. That should give us the thing. और फिर x equal to 1 पुट करना है at the end. So it's like 18 times 2 power 7 पहले मिलेगा, फिर बाद में अपन इसको छोड़ दो, इसका ऐसे 1 हो जाएगा. फिर अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे फॉर फ्रॉम दैट यू विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस गेट 34 एंड दैट टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन ऐसा होता है, राइट? एंड दैट टाइम्स 2 power 7 ऑफ कोर्स बिकॉज, राइट? और फिर फाइनली अपन इन दोनों को छोड़ दो, इसको डिफरेंशिएट करो, राइट? सो अपने को मिलेगा 7 टाइम्स ये तो 1 हो जाएगा, इसका भी 18 राइट हियर. हाँ, आगे 2x भी आएगा, सो जस्ट 14 एक्चुअली, राइट? और यहाँ पे पावर 6 आएगा, राइट? सो 2 power 6 दैट शुड डू इट. सो ये क्या हो जाएगा? इट्स गोइंग टू बी 9 times 2 power 8 प्लस 17 times 2 power 8 8 not 9. फिर प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है? 7 times 9 times 2 power 8. So 2 power 8 कॉमन ले लो, इट्स गोइंग टू बी व्हाट? 9. Okay, it's like 8 times 9 which is 72. Then plus 17 of course. So 2 power 8 and then ये हो जाएगा 89. So 89 times 2 power 8 which is option S. 52 का S, C का S. Okay, D करते हैं. Eleven times 10c0 plus 10c1 upon 2 plus 10c2 upon 3 चलते जाओ till it's like integrate किया basically अपन ने, and then plus 1. C0 से start करें ना अपन. Okay, fine. So 2 3 हाँ ये तो obvious type का ही लग रहा है, मतलब तुम्हारे पास में जो x था उसको तुमने इंटीग्रेट किया and then you get this thing. Fine. So just इसको इंटीग्रेट करने का आंसर मतलब x की पावर 10 upon 11 upon 11, right? And it's going from what? I think it's going from 0 to 1. Right, that's the answer. That's what this whole series is. अब फिर उसको बस इसमें put कर देगा and you'll get the thing. So 11 times of that, boom, 1. And then this thing plus 1. That's what we look for. So 2 power 11 minus 1 plus 1. 2 power 11 is the answer, which is R. Next, 53. Let f from real to real be function such that f of 1 equal to 3 and f dash of 1 is equal to 6. Then limit as x tends to 0 of f of 1 plus x upon f of 1 to the power of 1 upon x is, so 1 plus x which is 0 is going to be f of 1 upon f of 1 which is 1. 1 की power 1 upon x, so 1 power 1 type का हो गया ये. Sorry, 1 की power क्या? Infinity. Okay, it's gonna approach t. I understand this. So right, मतलब क्या बस -1 plus 1 करो, like 1 plus जो भी पूरा आ जाएगा, just call it m. And that's the power of m 1 upon m, sorry, फिर उसकी power m and that thing upon x, right? ये चीज e अप्रोच करेगी, so e power जो भी है k is just m1 x. m was just this whole thing, f of 1 plus x upon f of 1 minus 1, right? Which will be f of 1 plus x minus f of 1 upon f of 1, or which is upon x, like x, and then this thing upon f of 1. Look, this whole thing is just the derivative, right? At 1 of course, मतलब इसको तुम h में लिखो ना, change of variable, cool. अब क्या है? It's a derivative at x equal to 1, so that's going to be 6. और नीचे क्या? f of 1 which is 3, so 6 upon 3 is 2. So k should be 2, which is R. Okay, 54, sorry, 53 का क्या? B करते हैं. Limit as x tends to 0 of ये चीज 1 plus x square minus e power x upon x square. Ooh. So e power x can be written as 1 plus x square upon 2, right? Plus whatever, we don't care. So minus में cancel हो जाएगा, just it's like x square upon 2 upon x square, 1 upon 2 is the answer. So B का answer तो easy है, just call it P. Cool. Right, C. Limit as x tends to 0 of this thing
x f of x minus, okay, is 1 upon 3, then what is this limit? हाँ, तुमने बेसिकली इसको x से डिवाइड किया ना, और कुछ थोड़ी ना किया है. सो f of x minus sin x upon x sin x, right? Okay, so you are saying कि ये limit 1 upon 3, and then from that you want to find what this limit is. वो करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं? f of x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स साइन एक्स तो मैं कर ही दूंगा, मतलब वो तो हो ही जाएगा. एंड आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू इज प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 minus s upon x upon, you know, x sin x, right? And boom, you will have the thing. Cool. They should do it. They should really do it. Yeah. This is like x square plus 1 upon, अच्छा यहाँ पे 1 upon x आएगा, which is not good. Okay, x से multiply करा लो दोनों side, it's gonna be what? x cube plus x minus sin x upon x square sin x. We know इसको linearly तुम treat कर सकते हो, मतलब ऊपर अपने पास भी x cube की टर्म्स का ही काम है, तो नीचे वाले इसको तुम x cube ही रखो ना. ये तो वैसे भी कटने वाला है. So sin x is like x minus x cube upon x cube upon 3, right? So 3 factorial is what I mean. Yeah. Not 3. It's supposed to be. Wait, is that right? 3 factorial रहेगा ना नीचे. Yeah. So it's got to be x with x cube upon 6 basically. So right, x तो कट जाएगा. Other than that, just get 5 6 of x cube upon x cube. So 5 6 is the answer. And according to you, just 5/3. Wait, what? ये चीज 5/6 है, और ये तो ऑलरेडी था ना कुछ भी. It's 5/6 plus 1/3. Right, which is, wait, is that correct? ये चीज तो we know just 1/3 है. What about this guy? If that's 5/3, that's like saying that's 1/6 right there. Oh, वो negative में. Okay. Of course. Okay, just you know, let's deal with the Taylor series. So अपना फंक्शन क्या रहेगा? sin x. Okay, फर्स्ट 0 पे क्या है? ये 0 हो रहा है. ओके, फिर इसका पहला डेरिवेटिव क्या है? कोसाइन x. कोसाइन x एट x इक्वल टू 0 इज जस्ट 1, तो इसलिए x आता है x अपॉन 1 फैक्टोरियल बेसिकली. फिर अगला डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव साइन x, वो तो 0 हो जाएगा. देन उसके बाद में क्या था? नेगेटिव कोसाइन x एट x इक्वल टू 0 इज लाइक 1. ओके, तो वो नेगेटिव आ गया, राइट? ये नेगेटिव बना जाएगा. And it's just going to be x cube upon 3 factorial. So there we go. It's supposed to be x cube upon 6. जब अपन ये करेंगे, it's going to get, I think it's like 1 plus 1/6. Yeah, because हाँ ठीक है. And that thing plus 1/3 I guess. So 1 plus क्या हो जाएगा? 3 upon 6. Wait, what? Is that real? Not to be real, but that सही तो नहीं लग रहा है. सॉरी. अपन ने इसको somehow change किया. Oh God. This is actually equal to 1/3, right? Not this. ये पूरा combined पहली लिमिट रहती है. अपने को ये लिमिट ढूंढनी है, इसको L बोल दो. L is equal to 1/3 minus ये सारी चीज minus 1 minus 1/6 basically. Right, okay. Now it's understandable. I think that's how it's supposed to be. अभी -1 आ रहा है. That's not what I want. Right, ये तो नेगेटिव में आ जाएगा. It's not correct. Can't be. It's like minus. Okay, it's 1/2 minus 1. It's like minus 1/2. That's not what I want. ये क्या हो गया यहाँ पे? That's not nice. Something went wrong, of course. -x or -1 मैंने insert खुद से किया, and then you had to do the other thing. So plus x or plus 1. Minus, oh, x square.
नो ओके वो x2 अपने आप हो जाता है x2 प्लस x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब बेसिकली राइट हाँ राइट yeah of course it's supposed to be 1 plus 1 upon 6 that's how it's going to be राइट बट ऐसे तो काम ही नहीं करेगा बिकॉज ये चीज 1/3 एंड देन राइट ये क्या हो रहा है यहाँ पे अपने को नेगेटिव मिल रहा है सो इट्स नन ऑफ दीज बट नो इट्स नॉट बी नेगेटिव 1 अपॉन 2 इन दैट केस और वो उन लोगों ने दिया नहीं है हाँ राइट फिर मैं फोर्सिबली बोल दूंगा जस्ट नेगेटिव 1 अपॉन 2 है राइट so 53c is negative 1 upon 2 okay next move on इसका d करते हैं limit as x tends to 0 of this thing 2 e power 1 upon x minus 3 e power negative 1 upon x upon e power ठीक है ना तो more like 1 upon x tends to infinity okay plus minus infinity अपने को दोनों टाइप की लिमिट्स देखनी पड़ेगी so लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें x tends to negative infinity sorry 1 upon x tends to negative infinity उस केस में ये जो चीज रहेगी ये डोमिनेट करेगी so that's why negative 3 okay it does not exist s डायरेक्टली अपन बोल सकते फिर so d का तो ऐसे हो जाएगा okay let's go to 54 let a b c d e are 5 numbers in which the first 3 are in ap and the last 3 are in hp if the 3 numbers in the middle are in gp and the numbers in the odd places are in okay first 3 in ap last 3 are in hp if the 3 oh ये मैंने आई थिंक कहीं भी किया हुआ है कर सकते हैं बट बहुत टीडियस रहता है सो फर्स्ट 3 करना ही तो पड़ेगा कॉपी तो निकालना ए बी सी डी ई राइट 5 नंबर्स है पहले दिन एपी में सो ए एंड देन फिर मैं सकता हूँ यू नो ए प्लस सी अपॉन 2 एंड देन सी ओके और डी कॉमा ई फिर बोला है कि लास्ट 3 जो है वो एचपी में है सो डी कैन बी रिटन डिफरेंटली d can be written as so 2 upon 1 upon c plus 1 upon e basically like 2 ce upon c plus e okay और फिर क्या if the 3 numbers in the middle are in gp right so in that case right what you have is c square is equal to income multiplication which is you know ec upon c plus e times you know a plus c right or you can think of it like 1 upon c plus 1 upon e that works as well so इसको उधर भेज दो c plus c square upon e is equal to a plus c ये तो गया right so what does that mean c square is equal to ae so ये तीन in fact दी हुई है so numbers in the odd places are in gp okay so इसका आंसर p रहेगा next 55 sorry इसका b करते हैं जल्दी भी नहीं let ABC so A1 B1 C1 and A2 B2 C2 ठीक है 3 triangles right angled at C1 C2 C3 respectively area of these triangles are in AP and perimeter are equal hypotenuse are of the triangles are in अच्छा areas are in AP and perimeters are equal huh? perimeter are equal that's weird in that case जो अपना you know in radius रहेगी वो भी in fact you know AP में रहेगा right because areas in AP and perimeter are equal so in radius must be in AP as well okay but what's the in radius how do you figure that out so A minus R plus B minus R is equal to C right so the in radius or more like 2 times the in radius is just A plus B minus C but that's like A plus B plus यानी कि perimeter minus 2c so basically r is just semi perimeter minus c right और क्योंकि semi perimeter सबके equal है right तो बस hypotenuse जो है so the in radius which are in fact in AP what does that mean that s minus c1 by the way point नहीं है मैं hypotenuse की बात कर रही हूँ so इसको h बोल दो यार h1 right फिर s minus h2 and s minus h3 are in AP basically that's what we are saying h1 h2 h3 are in AP as well. So B का answer Q. Next.
C. If ABC are in AP and ACB are in GP, then CAB are in, okay, ABC and AP and ACB are in GP. तो बस उल्टा कर दिया, right? Oh, okay. तो एक काम करो ना, ACB को तुम, okay, so तुम A और C को तुम लिख सकते हो, AR squared. So तुम्हारा जो ABC रह जाएगा, like, okay, 2B equal to A plus C. But then if you think about it, um, C is just AR squared. It's like, okay, A plus AR, sorry, AR, not AR squared. Or B is just, AR squared. So actually like 2AR squared. What does that mean? 2R squared is equal to 1 plus R, basically. So 1 plus R minus 2R squared is equal to 0. Yani ki 1 plus 2R times 1 minus R is equal to 0. So either ratio is 1, but A is not equal to B is not equal to C बोला है. So ये तो काम नहीं करेगा. Then the other thing is ratio is equal to negative 1 upon 2, right? Yeah. Okay. So जो अपने right, it's called A और फिर B क्या हो जाएगा? So B is AR squared, right? So it's going to be 1/4 of A. So this thing is A, this thing is B, this thing is C. अब क्या देखना है CAB. That's going to be negative 1 A होगा. Negative 1 upon 2 A and then 1 upon 4 A and sorry, अपने को B नहीं अपने को A चाहिए. And क्या है ये चीज? It's B. So 1 upon 4 A, right? क्या बचा है अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है. मे बी लाइक HP में है, एक बार देख लेते हैं. सो टू मेक दैट हैपन अपन 4 करेंगे कॉमन लाइक -2 अपॉन 4A, देन ये हो जाएगा 4 अपॉन 4A एंड देन राइट. इसको मतलब नहीं बन रहा, ये तो बड़ा का घटिया है. ओके, एक बार चेक कर लो क्या हो रहा है, क्या कि ABC आर इन AP. So 2 times of this thing, इसको अगर ऐड करूँ इसको 1 upon 2, yeah, it's working. Okay, no big deal. और फिर अपने को लास्ट में देखना है CAB. ये तो कुछ ही कुछ है. so, पहले 4 upon 4 आएगा and then नहीं मतलब नहीं बनता इसमें कोई clearly, right? So none. S is the answer. Let's go to D. If the roots of this, let's cancel कर दो. इसके roots equal in magnitude, real and of opposite sign. कितना डिग्री क्या है इसकी? क्वाड्रेटिक है, right? Because boom यहाँ पे सेकंड डिग्री टर्म्स आ जाएगी, नीचे सेकंड डिग्री टर्म्स आ रहे. शिट, यहाँ पे तो 4 डिग्री आ रहा है. Equal in magnitude, real and are of opposite sign. But कितने रूट्स है? यहाँ पे CX पर आएगा, यहाँ पे AX पर आएगा, नीचे मुझे हार्मोनिक पॉलिनोमियल मिलेगा. यहाँ पे से हाईएस्ट जो टर्म रहेगी दैट विल एक्चुअली कंटेन x पावर 4 और A प्लस C कंटेन करेगा, राइट? और यहाँ पे इट विल जस्ट कंटेन यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक आने वाला है. डोंट रियली केयर अबाउट दैट. A is not equal to C. What is this? Of opposite sign, but कितने यार अगर सिर्फ 2 रहेंगे तो ओके, अपोजिट साइन, बट कितने? यानी 4 हो सकते हैं ना यहाँ पे तो. What is this? सिर्फ 2 थोड़ी ना हो गए यहाँ पे तो 4 हो सकते हैं, because right. This is clearly it's a biquadratic, right? मतलब तुम ऐसे करोगे तो फिर तुम्हें ऊपर क्वाड्रेटिक टर्म मिलेगी, नीचे क्वाड्रेटिक टर्म है, उसको उधर भेज दिया. यहाँ पे A प्लस C कोएफिशिएंट रहेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट. यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, सो A प्लस C स्टिल इज द कोएफिशिएंट. यहाँ पे तो 1 है, A प्लस C माइनस 1 लीडिंग कोएफिशिएंट है. इफ दैट्स नॉट 0, इट्स अ बाइक्वाड्रेटिक. सो उससे कोई मतलब नहीं बनता. जस्ट मूव ऑन. 55. Consider the okay, these guys. X is the distance of the point A from the plane BCD. क्या? ABCD क्या है? Points है, ठीक है. X is the distance of the point A from plane BCD. Y is the distance of point D from plane ABC.
ओके तो यहाँ पे x कहाँ पे यूज किया? अच्छा इसमें तो कहीं x यूज नहीं किया दिख रहा है, यहाँ पे यूज किया है। ओके x is distance of the point A from plane BCD. हाँ it'll take forever यार, how to figure out what that distance is. तो पागलपन है यार। what is this? It's just इसका मैग्नीट्यूड था। ओके और ओके यहाँ पे तीन ओके इसमें 3 मीटर्स आएगा और इसमें क्या आएगा? ओके मीटर स्क्वायर टाइम्स मीटर, इट्स स्टिल ओके, नो बिग डील। और तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हो। ओके बी क्रॉस सी एंड देन सी क्रॉस डी और डी क्रॉस बी, इन सब का कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, राइट? एक में बी है, एक में बस ए नहीं है, दैट्स ऑल यू आर हैविंग। ठीक है, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? राइट ओके ये सारे के सारे तो सिर्फ एरिया है यार, ये सारे सिर्फ एरिया है इनफैक्ट, राइट? बी क्रॉस इज द एरिया, सी क्रॉस डी इज द एरिया, डी क्रॉस क्या? ओके फाइन। नो ओके इट्स नॉट एरिया राइट अवे, जस्ट उनके बीच में जो लेंथ है, ओके दैट वुड बी द एरिया, नॉट दिस राइट अवे। think some कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें से। सो बी क्रॉस बी बोल रहे, लाइक ओके बी इसको इन्वर्ट करो एंड देन माइनस बी क्रॉस, इसका भी लाइक बी क्रॉस सी वेक्टर माइनस टी वेक्टर, राइट? ओके एंड देन प्लस सी वेक्टर क्रॉस टी वेक्टर और व्हाटएवर। Let's just make everything according to D. So यहाँ पे B vector minus D vector and then that cross C vector minus D vector plus D vector cross C saris, which is oh that's just that in fact, right? Yeah, मतलब you can write this thing as C vector minus D vector, okay, but D cross with that but negative of that, and this is gonna work. Okay, so it's just gonna be this thing. Sorry, minus यहाँ पे. So yeah, it's just the area. I mean, this whole thing is just the area of the triangle. The bow times x, that's just like area times height. Okay, but wait, that's only like a prism. That's not what I want. फिर तो अपने को जो how do I say this out? Think. BCD, that's just going to be, wait, उसका determinant, but why? Why is that? Just wait a second. Yeah, I think I should stop interruption. I'll see you in the next video.